Hello, hello. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Audible.
Sir, voice is not audible. Class started. So your class is not started yet. After 7 p.m. we'll be starting the class. Okay, thank you, sir. Second time करियो. Second time करियो. First time करছো ना तुम्हारा? तुम्हारे मोर first time करिছো ना class? हाँ. It first time. ना ये जो start ହେଇଥିଲା January रे. କରିଥିଲ ନା? So your material has changed. So you have to write down all these things. Okay. It will take around 50 to 60 hours, not less than that. Minimum 50 to 60 hours. First class note करছো? First class note बनेइছো? बनेइनो? Last moment किसी book पढ़ी जाई परिबनी. So it's better to start making your notes. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. अरे मोर तो फॉन्ट एटा नथिला. ये फॉन्ट केम चेंज हेगला? मोर तो अलगा फॉन्ट थिला. ये सिलियरी एज बोधे. हाँ? ऑटोमेटिकली एज. मोर तो फॉन्ट नथला. मु तो अलग फॉन्ट यूज करथिली.
ଗରମ ଜୋର କଣ ପାଇଁ ହଉଛି? କାମ କରୁନି ଏଇଟା। So, welcome to the ethics class. Full paper you have, 250 marks. Okay, that will help you for your ethics and also your philosophical essays. Okay, so I think I have covered what is ethics. You must have attended the class. You all have attended? You attended? No. Did you attend the last class? No, sir. No, sir, Huh? again, sir. No, sir. Last class attend करथिले करनथिलो? Okay. So last class में cover करथिली कि ethics कौन? Okay. So this class I'll be covering with starting with the chapter sources of ethics. माने ethics ର source कौन? तमे को जानले जे को कामटा ठीक को कामटा भूल केमिति जानलो? You must have been gone through all these things that this is right, this is wrong. You must have seen from your childhood that this is actually right, this is actually wrong. Yes or no? So that's why this is called as source of ethics. That means you are deciding from your prior knowledge that some actions are right, some actions are wrong. Okay. Sources. That means they are telling you which actions are right, which actions are wrong. कोटा ठीक कोटा भूल. As a child you don't know which is right, which is wrong. तुमको तुम सोसाइटी सिखाउथु, तुम फैमिली, तुम पेरेंट ये मन सिखाउथु कि एटा करनी. सकाल रात जल्दी सोई जाओ, 10 PM रे सोई जाओ, 6 AM रे उठी जाओ. ये सुनो, सिगरेट पियोनी, जोड़े तुम एबे मतलब भूली जाइछो, सिगरेट पिउछो. ये सुनो, बड़ों को देखले जुआर हुओ. ये सुनो. तापरे, so this is one source. Source one is your family. So they are actually telling you which is right, which is wrong. Second one is society. Society is nothing but your neighbors, the surrounding you are living in. तुम जो सोसाइटी रोच सेठिकर जहाँ भी सोशल सिस्टम थिबो से माने सिखुछ ना को जिनटा ठीक को जिनटा भूल. So in our society now in our society polygamy ता माने कोन more than one marriage is actually unethical. Yes or no? If you go 50 to 60 years, not 60, if you go around 100 years back, 100 years back, तो तम पाखरे एग्जांपल अछि कि नहीं कि पॉलीगैमी तो थिला. अरे मैरिज करले ना दुई तीनटा मैरिज करथले कोनथले. सो नॉर्मल पब्लिक भी मैरिज करथले दुई तीनटा. Yes or no? So at that point of time that was ethical. But now the society is not accepting this kind of behavior, this kind of act. So now this is unethical. Yes or no? This is unethical. So ethics से जानी पड़ती कि नहीं? Ethics का कौन actually? Ethics is actually studying the human action, whether that is right or wrong, just or unjust. तुम जो कामटा करूचो, जो decision नउचो, whether that is right or wrong, ठीक ना भूल. That is called as ethics. Morality भी सही बढ़िया.
somewhat similar, but there are some differences. ताकू हम discussion करिबा. Don't worry. तो तुम एबे कोन कहली family, society, then culture. तो या भीतर कोन गोटे माइन्यूट डिफरेंस अछि सोसाइटी और कल्चर भीतर. सोसाइटी कोन कि वर्तमान जहाँ चली जहाँ भी तुम सोसाइटी देखुछ कल्चर कोन जोटा आगुरु भी आसीछि. That is called culture. Yes or no? गुरुवार दिन आमिष खाइबानी, सोमवार दिन आमिष खाइबानी, बुधवार दिन जमै खाइबा. भलसे आमिष खाइबा. Yes or no? नॉनवेज खाइबा. Yes or no? हम सोचे तो अछि ना. अरे हम नॉनवेज खाइबन तो केबे भी खाइबानी. खाइबो तो सब खाइबो. What is the logic behind Monday and Thursday? तथापि हम सोसाइटी अछि Monday you should not take any non-veg. That is the day of Lord Shiva. Thursday, ladies particularly, they should not take any non-veg because that is the day of Lord, Goddess Lakshmi. And some people now they are also celebrating Saturday. That was not there, I think, 10 to 20 years back. Now they have started. Saturday means no non-veg. Yes or no? So society is also changing. Some behavior is being accepted now, and some behaviors they are not being accepted. Okay, culture. Then I told you religion. तो रिलीजन नंबर कौन कि नहीं तमे जब पिला थिलो मोस्टली ओडिसा रे कोन हम हिंदू पॉपुलेशन अधिक अछि. ओके तो हमर जो माइथोलॉजी अछि रामायण हे गेला महाभारत हे गेला तो सेटा कोन एक्चुअली एपिक तमे हेटी किसी माने कहानी सुनुचो आ सेठी तमे किछि वैल्यू किंबा किछि माने जो कोदी कोन गलो मोरल स्टोरी सो सुनुचो कि नहीं. They are also in terms of moral story they are also justifying some act and not justifying some act करचंदी ସେମାନେ. तो से रिलीजन रे तम माने किछि वैल्यू नउछ कि नहीं. Your thought process, your all intellectual ability is mental ability, that is actually culmination of all these factors. That is not actually yours. तमे जेमिति अपब्रिंगिंग तमर हेछि तमर सराउंडिंग जेमिति अछि तमे सेउट ही किछि जिंस तमे आनुछो आनी तमर जो थिंकिंग एबिलिटी अछि ना थिंकिंग प्रोसेस अछि ना ताको तमे मॉडिफाई करछो. ये सब कहि दिउनी माने गोटे लोक बिहेवियर देखि लोक कहि दिउनी कि ये लोकटा सेउट हेतिबो काई हेतिबो बिकॉज़ द इफेक्ट ऑफ द कल्चर सोसाइटी. Yes or no? Then school, educational institutions. Yes or no? So you are going to school, you are going to colleges. So there you are actually mingling with many other students. You are getting influenced by them. Their good character you are imbibing. तमर किसी गुड कैरेक्टर से माने भी इम्बाइब करछुंदी. तमर किसी बैड कैरेक्टर को से माने पॉइंट आउट करछुंदी. तांकर किसी बैड कैरेक्टर को तमे पॉइंट आउट करछो. So there actually you are trying to make a balance between your value system and their value system. Yes or no? So you are learning from them. School is a teacher too. सीखुछो कि नहीं? You are also learning from teacher. Okay. Then role model. Role model. You all must have some role models. So who is the role model? Huh? 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 Virat Kohli. So what did you learn from him? How to fight with sword, with bat. With क्या से था? Anushka. This is a question. Okay, they are asking. I think UPSC asked around 3-4 years. Who is a role model, and what did you learn from them or from him, and how that is affecting your own life? That was a question. 3-4 years down the line means 3-4 years continuously the UPSC asked. Now I think they have stopped asking this question, but they are asking. They were asking. Anything else? Who is your role model? Your name? तुम ना कौन? तुम ना कौन? मैंने यार आँखों में तुम ना कौन? दिव्या. दिव्या तुम्हारा रोल मॉडल किए? दिव्या दत्त. दिव्या भारती.
तो रोल मॉडल किए दिव्या भाती, दिव्या दिव्या तलवार हाँ? ये जो तार एलोकेशन है नहीं ना हाँ वो तो फर्जरी किसी चीज में ओके मुझे जानी नहीं केस बस 30 मिनट ओके ओके apart from that she is recently maybe a role model before that you must have admired someone in your life Shahrukh Khan so what did you learn from Shahrukh Khan अरे किसी तो कुओ किसी असुविधा नहीं कुओ जहाँ भी कोई सब ठीक that means humility तापरे सब पढ़िबा एथिक nothing but the value system and all about flowery English some particular terms you have to use in your answer writing तापरे बस okay that means hard work and determination okay hard work and determination anything else he is also honest okay he is not hypocrite he is honest whatever he likes he tells anything else हमारा कहा भी कोच में जहां को माने दीपक सरान he's a role model okay what did you learn from him tell me something okay so then your role model so you are also learning something you are trying to imitate that person yes or no तमें तांको तुम इमिटेट करियो चाहू शाहरुख खान आसिले तांको देखि पिला माने तांको वाला ड्रेस पिंदिया स्टार्ट कर देले सलमान खान आसिले तेरे नाम रो सब चुटी गाडिया स्टार्ट कर देले आमिर खान आसिले आमिर खान वाला चुटी सब से सब करिया स्टार्ट कर देले माने तम रोल मॉडल सब पॉप जाउछंती ए सब पॉप भी चलले सब yes or no so some good things you are actually imbibing some bad things also you are imbibing okay we'll study about how there are how influencers also giving some negative values in your character हमें पढ़िया ऊपर रोल मॉडल देन एपिक तुम कहली आउ किछ तुम मुंड रे आसी माइंड रे आसी समथिंग एल्स यू आर आल्सो लर्निंग समथिंग हां अरे नो नो मूवीज तीन घंटा जाई तुम गोटे बंद कमरा भीतर बसी मूवी देखुछ obviously you must be saying something and you are learning something तो माइंड को पूरा एक्चुअली ब्रेन वॉश होई नहीं से जगह रे so you are learning something so there also values recent movie which one oh my god 2 legalization of means introduction of sex education in the school that should happen that should be there okay some values you are actually imbibing or not did you see that movie you should see that movie okay then legal system I forgot legal system first thing I'll start with religion so religion तुम किसी सीखुछ जेमती good and bad about the society then non-violence you should not have non-violence ideas of karma you should do whatever is in your hand तमन पाखरे अछि पढिया पय वर्तमान तम ड्यूटी करो that is the duty is to study तम रिजल्ट जेबे आसीबो सेबे देखा हबो कोन हबो तमरो but now you have to study मु डाकी दे तमन चिंता करे डाकी दे okay ethics paper I will be giving you notes this is needed then ideas of karma devotion
तुम जहाँ को भी लाइक करूछ ता प्रति होल हार्टेडली ताको क्वेश्चन न कि तो डिवोशन माने केमिति कोन माने यू हैव टू फुली सबमिट योरसेल्फ सो दैट यू कैन लर्न समथिंग तुम डिवोशन न रहिबो का ऊपर देन यू कैन नॉट लर्न एनीथिंग सपोज योर टीचर देन यू हैव टू you will see no I know more than the teacher then actually you cannot learn anything from the teacher yes or no always teacher maybe he is not that much talented than like you but still he is a teacher so you have to obey you should forget that you know anything you should think that you don't know anything then only the blank mind can accept the thing if you have preconceived notion of many ideas then you cannot actually accept the thing you will try to compare the things yes or no तुम जहाँ भी वैल्यू सिस्टम थी ताको तुम कंपेयर कर ट्राई करियो तुम सीखी परिबन इट डिवोशन फॉरगिवनेस का ऊपर राग न रखियो फॉरगिव कर दे ओके बिकॉज़ इफ यू हैव सम ग्रज दैट विल एक्चुअली अफेक्ट योर मेंटल पीस yes or no so ultimately instead of harming that person you are actually harming yourself your mental peace you are harming you are surrendering okay then the time you are wasting there that time could have been wasted could have been used in some other productive work yes or no then truthfulness that's the basic minimum thing you should learn you are learning from your childhood तुमने सत्य कहबो truthfulness dutyfulness तमन जहाँ भी तुमको ड्यूटी दिया जायछि आज ए टीचर यदि मते ड्यूटी दिया जायछि कि तुमन पढ़े कि तुमरो सिलेबस सारीबी so this is my duty तो मु ताको with full dedication ताको फुलफिल करियो ट्राई करिवि से बेले तम मानकर कोन ड्यूटी कोन पढिया ड्यूटी so you have to read that so that is your duty you are taking money from your parents so you have to utilize properly that money yes or no then caring that is also important for the life to sustain without care can you grow without your mother's care nurture can you grow you cannot grow we all are here because of somebody's caring यही तो हम पढ़िले एठिक आसिले okay society can actually grow with caring maybe the mother is caring for her child आउ तमर भी सेटा रहिया था तमरो old parents को मन पाई caring yes or no that is one ethical term जदि लोक बापा बुढ़ा हेगल ताको छाड़ देउची then that is actually unethical act or not because in your need they were there तमे चली पर नथलो तमको तो बापा धरि चलौतले तुम पर पैसा नथिला सेमान तुमको पैसा देकी पढेले नाउ दे आर ओल्ड सो नाउ इट इज योर मोरल रिस्पांसिबिलिटी तमे मन तांको देखा रेखा करिवो यस नो देन रेस्पेक्टिंग नेचर यस हम मानकर सब थाए कि हम नेचर को रेस्पेक्ट करियो हम जेती दरकार नेचर को सब सेती जानिबा ना कि हम मन इच्छा जाकी काटी कुटा की सब सफा कर देई पळे आसिया ओके respecting nature so these all these things you are learning from religion religion is giving those things in you imbibing those things okay then legal system means not only judiciary not only police but also your constitution okay तो मैंने कौन करिया चाहू छथि गोटे ऑर्डर माने एस्टैब्लिश करिया चाहू ना ना they all try to establish an order in the society yes or no what is the order law and order तुम्हारा सिलेबस अच्छी कि नहीं पेपर 3 security issues law and order means the society should be functioning according to the law there should not be any kind of riot or any kind of disturbance that is called as order so seven with the use of legal system they are actually trying to make proper order in the society so that crime can be prevented yes or no तो सेथि तो जानि परछु कि कोटा क्राइम ने जेमिति ईव टीचिंग हे गेला हमन पछरे ईव टीचिंग कोन यू ऑल नो व्हाट इज ईव टीचिंग जाननो हां ओके सो ईव टीचिंग मींस छेड़खानी करियो मानो से तो दैट इज कॉल्ड एज ईव टीचिंग कमेंट मारिया पिला जीवनो हला ईव टीचिंग किंबा आगो नहीं परियो कोन तमरो डाकैती नहीं परियो डाकैती लूट okay ransom like abducting someone and demanding ransom
ransom माने कौन ransom माने कौन अरे तुम्हें पढ़ुछ ना नहीं सिक्योरिटी इश्यूज ransomware ransomware पढ़ुछ कि नहीं Sir, it means, can I say, sir? कार छुआ को उठे नहीं पड़ेलो and now you're demanding you have to pay me 10 lakh rupees then only I can release your boy. So these all are illegal act, unethical act you are doing. So the legal system, maybe your police, maybe judiciary, maybe your constitution, in constitution you are learning something or not, like rule of law. ता माने law is above everything. Law पाखरे समझते तले अछंती. Maybe your president, maybe your prime minister, maybe whatever he may be. But in a democracy, before law, everybody is equal. Rule of law. Then right to equality. Then Article 78 लिखा है चीज़ Article 70 untouchability. Yes or no? Then human rights. यहाँ पर देखो इधर कितने दीटा क्वेश्चन ऐसे तमरो I think prelims रे human rights. Your fundamental right is nothing but they have derived all these rights from your human rights. Okay. So bills of rights थिला तमरो कोठी कला US रे. Then right to expression है गला जो तमरो right to expression, freedom of religion. Then avoidance of discrimination. तो ये सब जिनसे तमरो constitution हो, judiciary हो, किमा तमरो legal system हो, जिंदे police हो, they all are trying to inculcate these things in the society or not, in one way or other. So now you understand these are right thing and some are bad thing. So you are learning. If you like do web teaching, then I'll be jailed. If I'll do acid attack, then I'll be jailed. If I do open harassment, then I'll be jailed. If I'll kill someone, then I'll be jailed. So by the use of legal system, they are trying to say that these are illegal act. You should not do that. Yes or no? पिलाने तो मैं थिला पुलिस भी देखी डरतलो ना नहीं काहे डरतलो किसी खराब काम कले तुमको ऐसी पुलिस नहीं की पड़ेगा yes or no? So that is the thing. Then we'll go to तो बुझी दिल तुमको preamble तुमर अछि कल्चर तुम बुझी लेबे ओके लिखि दियडा को सोर्सेस ऑफ एथिक्स लेखो सर स्क्रीन को टिके जूम करिवे तुमर स्लाइड काई विजिबल मते पूरा विजिबल देखा होची पूरा भल से देखा होची विजिबल होची मते पूरा देखा होची ठीक से तुम मनकर स्लाइड को सर लोअर टाइप दिखा रहा है बट दिखा रहा है सोर्सेस ऑफ एथिक्स जस्ट राइट इन वन वर्ड ता माने बुझिया दरकार ना कि सोर्सेस ऑफ एथिक्स माने कोन सो इट इज द सोर्स it is the source of deciding which action is right or wrong. Okay. सर आउथर स्टार्टिंग it is the source which decides some actions are right or wrong, which actions are right or wrong. Okay, then some sources of ethics are write down your religion, just write in point one religion. तमाने सेही माने ही तम मानको दोउचंती कि कोउटा एक्चुअली तमर ठीक कोउटा तमर भूल को जिंसटा तमर को एक्ट तमर ठीक को एक्ट तमर भूल जेम तम रिलीजन तम बुझेली ओके तुम गीता पढुछो महाभारत पढुछो जहाँ भी पढुछो सेतरे एक्चुअली स्टोरी वे तुम जानिया पाउछो कि नहीं बर्तमान पिला पचारिबो कि गीता महाभारत विषय से किसी कहि परिबेनी किंतु हम माने पूरा सब कहि दुथले काहे कि हमन को पढा होतला सुना होतला देखा होतला एबे के देखु ना नले हमर किसी माने अछंती एक्ट्रेस अछन से माने रामंकर भाई की से कहि परना की थिला हैं केबीसी रे
ତାକୁ ପଚାରିଲେ ତମ ରାମଙ୍କର ଭାଇ କିଏ ସେ କହିପାରିଲେନି। ୟେସ୍ ତା ବାପା ନା କଣ? You see, simple question. She could not answer. Okay. Anyway, like I don't. First one is religion. Religion teaches us truthfulness, dutifulness, respect for elder, respect for women. Yes or no? If you see Mahabharata and Ramayana, there is always respect for women, and those who violated that, they actually got destroyed. Yes or no? Respect for women, then devotion, then truthfulness. You are learning from Yudhishthir, truthfulness. Okay, forgiveness, caring, respect for nature. ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? sources of ethics ମାନେଟା କ'ଣ actually? ମାନେ ତମେ କୋଉଠୁ ଜାଣୁଛ ଯେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଠିକ କି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଭୁଲ? ତମେ ଆଜି ଚାଇଲ୍ଡ ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ଏନିଥିଙ୍ଗ। ତମେ ଛୁଆବେଳେ କ'ଣ ଜାଣିଛ? କି ଜାଣିନ ନା କି କୋଉଟା ଠିକ କୋଉଟା ଭୁଲ। ତମେ ସବୁ ଜାଗାରୁ କିଛି କିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମ ନଉଛ ତମ ଭିତରକୁ, ତାପରେ ହିଁ ତମେ ଡିସାଇଡ୍ କରୁଛ କି ଏଇଟା ଠିକ ଏଇଟା ଭୁଲ। That is nothing but sources. Okay, ତମେ ଯଦି ମନି ନଉଛ, ତମେ ମନି କୋଉଠୁ ନଉଛ? ତମ ସୋର୍ସ କୋଉଟା? ତମ ବାପା ମା। ସେଇଭଳିଆ ତମର ଯୋଉ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି, ସେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମ କୋଉଟା ଆସିଲା? ସୋର୍ସ କ'ଣ? ସେଇଭଳିଆ ସେ ରିଲିଜନ ହେଇଗଲା, ସୋସାଇଟି ହେଇଗଲା, ଫ୍ୟାମିଲି ହେଇଗଲା, ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇଗଲା, ସ୍କୁଲ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ଦେଖ ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ୍ ହବ ହେଲା, ତ ତମର ପୁରା ମନେ ରହିଛି। ଦେନ୍ ଲିଗାଲ ସିଷ୍ଟମ। ଓକେ, wait. From religion, then start with culture. For example, Vasudhaiva Kutumbakam. You can write down Vasudhaiva Kutumbakam. Different example ଦେଇକି ତମେ ଲେଖିବ ହେଲା, Vasudhaiva Kutumbakam. Then ଆମର କ'ଣ ଅଛି? One world, one family. Tolerant to others' view. अतिथि देवो भव. Toleration for others' view. Toleration. TOLERATION. Toleration for others' view. ଆମ କଲଚର କ'ଣ ଅଛି? अतिथि देवो भव। Anything else? सर्वे भवन्तु सुखिनः. निष्काम कर्म. Yes, write down निष्काम कर्म. এটা নিষ্কাম কর্ম তো রিলিজন শিখিগলা না তুমি? কলচর কোন আছে? Contented life. ଆମର କଲଚର ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ କଲଚର ନୁହଁ। ଆମମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇମ୍ବାଇବ୍ କରୁଛନ୍ତି କଲଚର, କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ କଲଚରକୁ ଇମ୍ବାଇବ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ କଲଚର ସବୁବେଳେ ଥିଲା କ'ଣ? କଣ୍ଟେଣ୍ଟେଡ୍ କଲଚର, ମାନେ ତମ ତମର ଯାହା ଅଛି ସେଇଥିରେ ଖୁସି ରହିବା ପାଇଁ। ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ? ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ଆସିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ଆସିଲେ, ଦେ ଥଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ସୋ ଦେ ସ ଦ୍ୟାଟ୍ they are self sufficient, they don't need anything. Yes or no? Self contentment, spirituality, এটা সব আছে না ଆମ କଲଚରରେ। self contentment, spirituality, non violence, already ଅଛି ତମର religion ଅଛି। Religion is nothing but they are also affecting your culture in some way or other. Yes or no? Then next, society. Point 3, society. For ethics, definitely make one note, because after the paper 3, paper 4 you'll be getting around 2 hours time. I think how much time you'll be getting? 2 hours, 3 hours. So what is the timing? 9 to 12. 10 to 1 then? 9 to 12, 2 to 5. Yes, yes, that is actually actual time. For UPSC also 9 to 12, then 2 to 5. Okay, so you'll be getting 2 hours time. So in that 2 hours time, you can actually see all these things. So always try to make one note for ethics. Maybe small, concise note, but always make.
सब जिन तुम जहाँ भी पढ़ी जाइथिबो एई मास तुम सरी जिवो एथिक सरी जिवो तो एथिक सरला परे ना तुम टाइम रहिबो तो तुम ए सब आ न पढ़िबो ताल सब भूली जिवो तो से नोट बनै के रखो ओके वेयर जाई सोसाइटी ओके राइट डाउन कोऑपरेशन brotherhood you are learning or not brotherhood so to help kariya brotherhood okay respecting others respecting elders okay then okay this much you write down. All other points are already covered then write down family respecting elder respecting mother and sorry respect for parents for family you are learning or not respecting elder respecting parents okay then truthfulness तुम पिला पूछ ना नहीं मिछ कहबनी ट्रूथफुलनेस काइंडनेस ऑलरेडी तुम सोसाइटी रिलीजन देखि ना से सेटा को रिपीट करूनी ओके हाँ यस केयरिंग आल्सो यू आर आल्सो लर्निंग फ्रॉम योर मदर केयरिंग यस और नो किछ नहीं पर कथा होछि okay then legal system from legal system by the use of punishment mechanism there is no reward mechanism in legal system punishment mechanism by the way of punishment mechanism they are also inculcating some values some ethical principles in you okay जेमति untouchability आगु untouchability बहुत थिला कि एबे अछि कि नाही डाउरी सिस्टम अछि कि जेने लिखे वाले बहुत सोसाइटी डाउरी नाही सती प्रथा सती सिस्टम तो राइट ऑन दैट जेमिति इक्वालिटी बिफोर लॉ रूल ऑफ लॉ इक्वालिटी बिफोर लॉ रूल ऑफ लॉ देन action against untouchability okay then freedom for religion and expression then abjuring violence and all these things are there okay I have already written in your religion part then write down your role model just लिखी दिया तो मेरा just point लिखी दिया role model movies से रोल मॉडल लिखी दिया तुम्हारा स्कूल ओके देन पियर्स मन पियर माने कोन पी डबल ई आर पियर माने कोन तुम सांग माने को कहजे पियर कहजे ओके फ्रॉम ए पियर्स बस सरीला तमरो सोर्सेस ऑफ एथिक्स आसेनी always remember that question from question in ethics are actually application oriented you will not find any bookish kind of question in ethics किछि रे छाड़ देले मैक्सिमम से तमरो एप्लीकेशन ओरिएंटेड आसीयो सेति में तमे सब कांसेप्ट जानि थिबो ना ताल तम एप्लीकेशन क्वेश्चन को करि परियो तमे यदि खाली सीधा एप्लीकेशन क्वेश्चन पळेबो देन यू डोंट हैव एनी कंटेंट तमु लिखिया पई ना तम पर कंटेंट रहया दरकार विदाउट एनी कंटेंट हाउ कैन यू राइट तमे 10टा जिंस पढला परे तमे गोटे जिंस लिख परियो ना कि गोटे जिंस पढला 10टा जिंस लिख परियो व्हिच इज राइट 10टा पढो गोटे लिखिबो ना कि तुम गोटे पढि जियो 10 लिखिबो तो सेति में आगे सब पढियो पडियो तुमको जहाँ भी तुम सिलेबस रे अछि सब सार तापर तमरो एप्लीकेशन ओरिएंटेड जो क्वेश्चन आसीयो तमरो सेटा तमरो डिस्कशन करो जाके दिन तो मॉक क्वेश्चन हो ना
तो मॉक क्वेश्चन डिस्कशन कर दो प्रिएम्बल लिखि दे सेतरे ए जो हमरो एटा जेतरा अछि कोडा हमरो लीगल सिस्टम रे लिखि दे प्रिएम्बल हमरो दोउछि ना नहीं जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फ्रैटर्निटी सेटा लिखि देबो सब बेले प्रिएम्बल को तुम मेंशन करिवो तमर जेंति प्रिलिम तमर प्रिएम्बल ला तमर एफडी एफआर ये सब इंपोर्टेंट सेबे तमर एथिक्स रे भी प्रिएम्बल सब बेले इंपोर्टेंट एनसीडी तुम खोलिबो गांधी तलिस्मान लास्ट पेज रे थिबो आ प्रिएम्बल तमर फर्स्ट पेज रे थिबो काई गछ एटा because that is the basic tenets of our legal system and our society yes or no our value system भी सेटा था एनसीडी लास्ट तो थिबो गांधी तलिस्मान फर्स्ट रे प्रिएम्बल देखिছো कि नहीं केबे खोली की केही देखि नथियो के जन देखि छात्र एकला गांधी तलिस्मान केही पढिছো नहीं एनसीडी भरे के खोली देखिছো लास्ट पेज रे के देखिनो ना ओके ओके कल्चर तुम कहि देली फैमिली फ्रेंड्स स्कूल रोल मॉडल मूवी जेटा सब लेखा हिची देन आमे जिबा इंपोर्टेंस ऑफ एथिक्स ता माने कोन कि एथि जो हम पढु जंती तार काम कोन तुम जे कोनसी काम भी करूछो तार किस तर माने नीड थियो ना ता सेहि में तो तुम सही काम करूछो तुम कि कोन पे आसो कि सिखे पे आसो तुमको एग्जाम पास करे अछि सेति में आसो ये सुनो तुम आर्थर रैंक वन नबार अछि से बेला एथिक्स को तुम जब पढुछो कोन पे पढिबो तार कामटा कोन सेटा होची इंपोर्टेंस ऑफ एथिक्स सो एथिक्स एक्चुअली डिवाइड्स between a man and animal you have the capacity to comprehend the things तुम बारे से एनालिटिकल एबिलिटी अछि कि कोटा ठीक कोटा भूल तुम जानिए पे एनिमल पाखरे से जिंस नाही that only differentiate between you and an animal yes or no जेहेतु तुम पाखर अछि इंटेलेक्चुअल एबिलिटी अछि सो एक्चुअली यू कैन डिसाइड व्हिच इज राइट एंड व्हिच इज रॉन्ग तुमको डिसीजन नवर कैपेसिटी अछि तो तुम से डिसीजन एक्चुअली दैट इज ओनली फॉर योर इंटरेस्ट और फॉर द सोसाइटीज इंटरेस्ट फॉर योर सेल्फ इंटरेस्ट और ओवरऑल सोसाइटीज गुड और अल्टीमेट गुड और अल्टीमेट हैप्पीनेस ऑफ द सोसाइटी तुमने कहा को मारी के एंजॉयमेंट करूछो किबा समस्त को बंचे के एंजॉयमेंट करूछो that differentiate between a normal person and a mahatma या no yes or no तो एते लोक हमर लडिले कोन कहलो इंडिपेंडेंस so only 2 to 4 people they got all this respect all this limelight why the value system actually they divided normal person ordinary person and one enlightened person हमर बुद्ध गले देखिया पई Gautam Buddha was Siddhartha at that point of time. So he saw that we all are behind money and all this daily work, daily routine. We are not getting some time. Now people are dying. So what is the need of that? So that's why he went for yoga. Then he got ultimate truth of life. Then he got the nirvana and not nirvana. What is that in Buddhist term? Enlightenment. Then he got the enlightenment and he called us Buddha. What is Buddha? Buddha is nothing but the term is for the enlightened one. Yes or no? So सेति भाई जेहेतु तुमरो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी अछि तो you can actually decide which is right which is wrong. So how you are deciding right or wrong that ethical principle will make you सेही दे तुमको हेल्प करिवो कि which is right and which is wrong. Yes or no? जदि गोटे सोसाइटी रे हम सोसाइटी काहे कि माने बंची गछि तो रास्ता रे जाउछो तुम डरी जाउनो तुम एठी के आछो माने तुम भाबुछो तुम गोटे इंस्टीट्यूट पैसा देले तुम से पढेबो काहे तुम फेथ काहे गस because you think because 90% of the people in this society are ethical if they have committed something then they will do that so they all respect truthfulness kindness and their responsibility जदि 90 टा 10 उल्टा हे गला माने 10% तुम भलो होला 90% खराब हे गला देन कैन द सोसाइटी विल सर्वाइव जोड़ा माने दैट इज गोइंग टू हैपन इन सम 1000 years आफ्टर दिस टाइम कलियुग इज नथिंग बट absence of ethical values there is no yug no timeline okay depending upon your ethical value system how they are degrading so you have divided the time into different yugs yes or no Satya Yug, Tritiya Yug, Dwapara Yug and
Kali Yuga. That means it will come from Satya, Tretaya, Dwapar, and Kali. Don't you find some kind of means some kind of linkage that the value system in the society that is actually downgrading? Yes or no? So after 1,000 years or maybe 2,000 years, that there will be Ghor Kali Yuga. Ghor Kali Yuga means what? All are behind their self-interest. Nobody is thinking about others. So that is the use of ethics. That means that will make you one ethical person, one just person, virtuous person. So you should know what is right and what is wrong. And if you know what is right and what is wrong, and तुम यदि सही हिसाब रे काम करछो, सही हिसाब ड्यूटी करछो, then society can survive. Yes or no? Money, technology cannot actually make the society drive for a longer period. Only the ethical value, compassionate nature, that can drive the society for a longer time. Yes or no? गाड़ी यदि इंजिन टा खराब थी तुम पेट्रोल पकेले कौन हम किसी हम कि तुम इंजिन टा कोटा तुम इंटेलेक्चुअल एबिलिटी टा दैट इज योर इंजिन तो तुम सेही ही काम करूनी तुम जते माने मनी अर्न करो जहां भी करो दैट cannot take you longer. So ethics is just like your food for your body. Ethics is just like that for your intellectual ability or moral. If food is for your body, then ethics is for your soul. It is called that. Yes or no? So it gives the moral path when you are facing some ethical dilemma. तमे कोटा ठीक कोटा भूल जानिए पे ना तमरे यदि एथिक्स तम पर थिबो माने तमे जानि पड़थुबो कि कोटा ठीक कोटा भूल ताल तमे गोटे प्रॉपर डिसीजन नै परिबो एथिकल डायलेमा होची तो दुईटा कि तीनटा तमर ऑप्शन थिबो तमे एटा करिवो ना सेटा करिवो तो सही समय तमर तुमको एथिक्स ही हेल्प करिवो कि एटा एक्चुअली कले ठीक हबो गोटे राइट डिसीजन नवा पई गोटे लाइफ रे एमिति टाइम आसी तमे कोन करि तमे भाबि बनथुबो जेमि तमे मन करो फेल हेले तर एग्जाम रे मन करो आई होप एवरीबॉडी विल पास मोर तम फेल हेलो so you would have dilemma. I have left the job and I'm here for preparing the exam. तो मो पर कुछ ऑप्शन नहीं मु एठी माने मोर गोटे ईयर बर्बाद हो गेला. So now you have dilemma whether I'll continue studying or I'll be going to the means my past previous job. If you have some kind of self confidence, then obviously you'll be preparing again. If you don't have any kind of self confidence, so obviously you will be going to the previous job. So you lost everything. There you lost your salary. Here you lost your chance. तो तुमको ठीक डिसीजन नवा पई बट एक्चुअली कैलकुलेटेड डिसीजन नवा पई तुमको एथिकल प्रिंसिपल ही तुमको हेल्प करिवो यस और नो देन एग्जांपल तुम देली आफ्टर एन एक्सीडेंट सेविंग ए पर्सन इज मच मोर इंपोर्टेंट देन पनिशिंग हु हैज हेल्ड द विक्टिम दैट इज एक्चुअली ए गुड समरिटन लॉ दैट इज बीइंग पास्ड बाय द पार्लियामेंट कि आगु यदि किए माने रास्ता रे पड़ी होतला ना तुम एबी देखिबो माने YouTube चैनल रे गोटे जगह रे माने सोशल एक्सपेरिमेंट हुए देखु तो मन एक्सीडेंट लाबर ना विक्टिम को हेल्प करबे लोक आसना समस्त सेही देखि लोकटा यदि उठि न नबी लोकटा सेठी मरि जीवो तथापि तक उठो न देखि सब तांगर रास्ता पळले जेमि माने डॉग माने रास्ता रे मरि जांदिनी सेमि भी बहुत लोक अछन देखि देखि पळेले हां वीडियो शूट हुए हां किछ लोक अछन वीडियो शूट करिवे there is actually a picture कि अफ्रीका रे एक्चुअली सेतो गुड माने बहुत बड़ा आसला कोन गलो माने फैमिन आसला हां नो गुड फैमिन आसला बहुत लोग मरुथले तो के गोटे फोटोग्राफर जाई शूटिंग करला पाखरे गोटे माने वल्चर अछि आ गोटे छुआड अछि आई थिंक यू मस्ट हैव सीन दैट पिक्चर so people commented that there is actually no one vulture there is actually two vultures there are actually two vultures one is the real one and another one who is shooting okay this kind of pictures he should not have shoot तापर काम दिला तार मोरल रिस्पांसिबिलिटी से टाइम रे कोन थिला कि you actually help you have the capability to help that person yes or no तो सही बोला तुम दिल्ली गैंग रेप रे माने जो वीडियो देखि थिबो I think you have seen that crime petrol series when they threw both boy and girl to the road many people left they saw that they are dying but still they left yes or no so that at that point of time with if you are ethical then you will take a good decision that is your moral responsibility if you have seen somebody suffering maybe a human being maybe a
animal, maybe an animal, that is your moral responsibility to do to help. Yes or no? So it helps to resolve moral issues. Then it ensures individual as well as social good. If you all are good in the society, ultimately the brotherhood can be there. So ସମସ୍ତେ ଭଲ ହବ and society ଭଲ ହବ କି ନାହିଁ? ସେଠି କିଛି ରହିବ କି ତମର ଯୋଉ riot kind of thing ଯୋଉଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି ରହିବ କିଛି ରହିବନି ହେଲା communal disharmony ହଉଛି ସେଟା ରହିବନି. You will be tolerant towards others' views. Yes or no? You can write actually all these things. Then smoking in public, if you're ethical, then you will not smoke in public places because you may be enjoying smoking, but the person who is actually sitting beside you or sitting or standing behind you, he might have or she might have asthma. So because of your smoking, he or she may face the ill effects of smoking, passive smoking. So if you're ethical, then तमे से काम करिवोनी. Then throwing garbage in public, ultimately you can understand this. Then resolve ethical dilemma lekha heichi. It helps to remove biasness and prejudice. You all have some kind of biasness and prejudice. You all think in some particular way by seeing somebody. So ethics will teach you that don't judge by seeing, by appearance. First, you should have experienced something. Then you can actually have a clear judgment. तमने काहाकू न जाने की ता ऊपर जजमेंट दवा ठीक नु. Yes or no? Then effective decision making which is good for the self as well as for the society. Yes or no? जो तुमको एते एग्जांपल देली रास्ता रे मैं दी जन मरचोंदी तमे तुम हेल्प न करिवो तने तुम सोसाइटी में कोन कलो किछ कलो की काली तमे पडिवो. Nobody knows when accident will happen. Ultimately if the value system of one person is degrading, ultimately society's value system is degrading. Yes or no? One rotten fish can make whole pond rotten. One rotten apple can make whole basket of apple rotten. Yes or no? ये सब लिखिया पड़ियो मानु. तो तमे खराब काम कलो तुमको देखिबे किछि लोक करिवे. Yes or no? तो सही समय तमे दी एक्चुअली किछिटा मोरल एक्ट कलो, then some people will learn from you and they will also do that thing. Ultimately your benefit will happen in indirect way. Suppose something happened to you after some time, then people will come to help you. Yes or no? So this is for yourself as well as for the societal development. Yes or no? So write down what is the importance of ethics. Some example like Ram Mohan Roy. So Sati was there. Nobody was actually helping to get rid of the system. But Ram Mohan Roy saw that Sati system is actually bad. You are actually putting somebody in fire. Fire means Jolda Jui. Somebody in fire when she is living, and she has full capacity to live also. Yes or no? That is the most painful kind of death. So he thought that is actually injustice and inhuman practice. So he actually did all protest and he approached British to criminalize Sati system. Okay. So write down what is the importance of ethics. अरे तुम ऑनलाइन प्ले मानक स्क्रीन काहे विजिबल होनी एत सब पूरा विजिबल अछि एटू देखाउ पूरा विजिबल अछि Yes, sir. Sir, it is visible, sir. So तुम clear. Yes, sir. Clear, sir. तुम काहे विजिबल होनी लिखुछो. No, sir, it is visible to us also. Okay. First start with that. Ethics will make person moral. Class में.
कहाँ चले? अब जो पूरा तुम्हारा यही होगा, क्या बोलते हैं उसको, इमरजेंसी। ओके, सो एथिक्स विल मेक द पर्सन मोरल। क्या हुआ? हाँ ठीक है ठीक है। Ethics will ethics will make a person moral. It will help to resolve ethical dilemma. It will help to resolve ethical dilemma. Then next point will help ethical decision making. It will promote harmony in the society. Harmony in the society. Harmony in the society. Then it will promote individual good as well as societal good, societal well-being, individual good as well as societal well-being. ହେଲା तापर आउ जिंस अछि रिड्यूस करप्शन से गुडा हिस्सा अछि ला इन ऑर्गेनाइजेशन लेवल इट विल रिड्यूस करप्शन. ओके देन it can reduce the crime rate. Okay, write down these things are not written but these things you should write. Reduce corruption, it is nahi jada, it is nahi jada, it will reduce corruption. Okay, reduce crime. Okay, then it can promote egalitarian society, EGALATARIAN, egalitarian society. Which can bring justice to all. देखो, this is very small thing I have given. तमे ताकू यदि से खाली पचल what are the benefit or importance of ethics तो ताकू तमे कोन करिवो डिवाइड कर दबो. एक्चुअली केमिति लिखा जाय क्वेश्चन तुम देखो तुमको यदि गोटे से पढ़ी देला तमे आराम से अलग सब कर दबो. केमिति करिवो से मन पचला व्हाट इज द नीड ऑफ एथिक्स तमे कोन करिवो तो तमे जानि एबे बुझी पलो एथिक्स एक्चुअली कोन बुझी पलो नहीं एबे तो का डाउट नथियो व्हाट इज एथिक्स तो सीधा डिवाइड कर दो इंडिविजुअल लेवल पे. एथिक्स रे कोन रोल अछि इंडिविजुअल लेवल रे, देन सोसाइटी लेवल रे, देन ऑर्गेनाइजेशन लेवल रे, देन पॉलिटिकल लेवल रे, देन एनवायरमेंट लेवल रे. ओके केते पॉइंट 1 2 3 4 5 सब तो 3 4 पॉइंट लिखि देबो योर जॉब इज डन. बुझी पलो ये बढिया ही लिखा हुए कहीं तुम खाली गोटे पॉइंट लिखुछ ना तुम बहुत कौन करिवो कि यूनिफॉर्म वे रे लिखि दो माने मल्टीफेरियस होबनी वन साइड लागियो सेटा क्वेश्चन आंसर वन साइड लागियो ना कि मल्टीफेरियस लागियो. ओके स्क्रीन आसुनी एते देखा होची एते देखा होची सेमान को एक्चुअली ये जो देखा होची ना एटा को ताको से पिन करिया पड़ियो ताको पिन करो
Sir, last one. Visible. No, sir. Environment level. Suppose you are unethical, then you'll go for cutting trees without thinking the repercussion. You will go for killing animals without thinking the repercussion. You will not have any compassion for the nature. Okay. So now which is happening? When you have ethics, then you will think about the balance between your economic development versus environment. जोटा कौन कहछि हमरो sustainable development. Yes or no? Don't worry. हमें आगु को जीवा ना ये जिन सब हाउ थरे रिपीट हबो मे बी ट्वाइस थ्राइस रिपीट हबो तो तुमको आराम से मन रही जीवो. ओके, डोंट वरी. Then without ethics जोटा तुम कहली सेटा ही आसी होछि. इंडिविजुअल लेवल कोन हबो? चीटिंग हबो. You will be an immoral person. You can take the example of immoral politicians, those who are actually going to the politics for the power and money. Then abusive behavior towards your loved ones, abusive behavior. You'll be trying to abuse. When तुम्हारा power अच्छी, then you'll be trying to abuse. Maybe verbally, maybe physically. Domestic violence, that will increase. If cheating is cheating ऊपर लेके जाओ, morality will decrease. You'll become apathetic. You'll become apathetic. That means you don't care what is happening around you. Like I said. Okay, they both are lying on the road and everybody is passing, nobody helped them. Apathetic. That is called as apathetic. You don't care. Then dacoit, corruption, dishonesty, selfishness, exploitation, breaking of law. These are the individual level. Those things will be happening without ethics. So did you understand? When such kind of questions are being asked, to make it multidimensional, first you have to break it down. एमिति क्वेश्चन तमरो लिखि परिबो भलो क्वेश्चन लिखि परिबो तमे सीधा पॉइंट लिख दि गलो ना दैट लुक्स वेरी हापा जागा तुम बेसी मार्क्स मिलियोनी हेटी तुम सीधा पॉइंट कर दलो सब पॉइंट लिख दलो फुल पॉइंट कर फुल सब पॉइंट लिख दलो लुक्स वेरी ऑर्गेनाइज्ड आंसर तमरो प्रीलिम्स रो हैंगओवर बे छाडो नाउ यू विल लीव द प्रीलिम्स हैंगओवर प्रीलिम्स इज डिफरेंट थिंग यू हैव द आंसर इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू हैव टू चूज द राइट वन इन मेन एग्जामिनेशन all the things you should be knowing that you must be producing. You don't have answer in front of you. So very goal बोले रहते हैं तो हम पूरा लिखी हुआ रहते हैं. Okay. So now you get out of the prelims hangover. Now start writing. Societal level. Just now said raising corruption, women harassment, lawlessness, exploitation of nature, gender crimes, anti-social activities like murder, loot. Okay, you can connect that with the Hitler's rule. At that point of time, nobody questioned because of moral degradation. Nobody questioned Hitler that whatever you are doing, that is actually wrong thing. Yes or no? If you read the world history, then you'll see the actual face of Hitler. ऑनलाइन पिला माने तमे वरीड होनी तमे क्लास को देखो तुमको नोट्स मिली जिवो हमर एटी अछन भलो पिला माने अछन सो नोट्स बनौचंदी तमरो नोट्स मिली जिवो डोंट वरी अबाउट दैट. ओके, किंतु किछरा पॉइंट तमर एटी ऐड हेनी जोटा मु बारंबार तमने कहूची से पॉइंट तमने ऐड कर दियो. सब कि जहां भी मोर इंस्टेंटली माइंड रे आसी ना सेटा तुम ऐड करनी ना एटी ताको तुम ऐड कर दियो.
Hmm? Might is right. You have the power, you can do anything. Maschenaya. That is a philosophical concept of Kautilya. Hmm? Yes. Kautilya. Political science, those who have, and public administration, those who have, they know. Maschenaya. Jungle rule. Might is right. You have written? Then political level, you have corruption. Then you have criminalization of politics, politicization of criminals, criminalization of politics. Then nexus between criminals, politics, and degradation of value system of the politics. Horse trading that is happening now. जो पार्टी ताकू 5 कोटी दला से पार्टी पळेले आज तुम इलेक्ट कल गोटे एमएलए को कि एमपी को काली से देखियो ये पार्टी रे अछि काली से आउट को पार्टी को जंप कर जेतियो बिकॉज़ ही इज गेटिंग 100 crore from another party. Yes or no? That is happening. That means that is actually clear violation of the faith of the citizens. सेमानकर फेथ तमको थिला बोली तमको से इलेक्ट कले तमे तांकर जो फेथ थिला ताकू तमे कोन कलो डिस करी आउट पार्टी को पळेलो. दे शुड बी बार्ड फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन फॉर लाइफ टाइम. तमर इच्छा थिला तले इंडिपेंडेंट लड़ता था तमे काई गोटे पॉलिटिकल पार्टी रु तमे माने टिकट नहीं लड़ेलो काई. When they are actually voting you, though they are voting you, they are also voting that party also. Yes or no? They are not only voting you. When you are jumping from this party to another party, that means you should be barred for contesting election for lifetime. You should contest from the independent post, as independent candidate. Okay, that is called as defection in the political system. You scheduled, but yes. Then harassment of opponent. You have ED, CBI. That means muzzling the voice of opposition. That will actually what will happen? Means because of that, what will happen? The democratic value. That will degrade or not? If there will be no opposition, do you think that our political system will survive? Our democracy will survive? Our democracy cannot survive without opposition. Yes or no? So the opposition has similar or same kind of role, equal and important role like your ruling party. They both should be there. Your ruling party should be strong and your opposition should be strong. Yes or no? Then communal politics that is happening, religion-based politics, caste-based politics. I am from this particular caste, so this particular caste should vote me. जोटा तमरा इंडिपेंडेंस टाइम रे कोन थिला सेपरेट इलेक्टोरेट. Yes or no? Separate electorate, communal electorate, okay, communal award, whatever you may say. So you can actually interlink these things. They all are unethical or not? As a political party, you should be looking after everybody, not only a particular party. You may have some grievance that you may put forth, but that doesn't mean that you have to only represent that particular community. Yes or no? हमको समझते देखिए रोज. Then abuse of power. When you have full majority, then you can actually do whatever you want. Nobody can check you. When opposition is very weak, then whatever the policy you decide, you can do. So now in the recent monsoon means special session, after monsoon session, nobody actually told what is the actually agenda. Do you think that is actually ethical? Okay. Anyway, I cannot go for that. We'll decide. Then at international level, that what is happening at Gaza? Can you see? Because of war, children they are dying because of lack of medical aid. Medical aid भी नहीं, ସେମାନେ ମରୁଛନ୍ତି ସେଠି. Ukraine रे innocent citizen, they are also dying. Ukraine रे ସେବେଳେ ତମର bombing ସେଇ ତ ମୁଁ କହୁଛି ନା, bombing at hospital. Then ତମର migrant crisis होची. Then exploitation of the exploitation of the
developing or developed country by the developed countries. Yes or no? तो जो food security ऊपर जाऊ अछि तमरो माने you cannot actually give that much amount of subsidy in economics तो economics पढ़ी दियो ना quota system तमे एतिक परसेंट रो अधिक सब्सिडी दे परिबनी बट सेमानकर जो मान जीडीपी रो जो रेशियो टा अछि ना that is very high they can actually sustain that but our GDP is not that much so will allow me only 10% then how can I give support to my farmers you have power at UN you have power at WTO so you are actually exploiting your power for your own gain that is not ethical then because you are polluting sea level rising तो ता जो हमर स्मॉल आइलैंड जो कंट्री अछन से माने एक्चुअली बुडी जाउछन तो बड़ा किछि मालदीव आ कंट्री गोटे नथिबो मालदीव्स जो बुलिए पे जाउछ सेठी कंट्री किछि नथिबो दैट विल बी अंडर वाटर तो का जो गेला बिकॉज़ यू polluted the environment sea level rose and now we are actually facing the brunt of that pollution or global warming so who will pay for that काली तो तोरा पूरा मालदीव्स ता इनंडेशन हे जिवो पूरा फ्लडिंग हे जिवो तो से माइग्रेंट हेबे ना नहीं सर कोठी जिबे सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम तुमे तांकू न रखिबो देन दैट इज एन एथिकल इशू और नॉट बिकॉज़ ऑफ होल कम्युनिटी होल ह्यूमैनिटी दैट इज एन एथिकल इशू तुम माने सब पोल्यूट कलो ता जो से बुडुची ता जो जहां भी माइग्रेंट हेबे तांकू रखे माने दायित्व पूरा वर्ल्ड कम्युनिटी रो यस नो से बलिया डेवलप्ड कंट्री आसी तमरो डेवलपिंग कंट्री किबा तुम मिडिल ईस्ट आसी की इंटरफेयर करले सेठी एबे वार चलला लोक एक्सोडस होउचंदी तो ताकू हेल्प करे काम तमरो रानी तमको नो दिस इज नॉट माय रिस्पांसिबिलिटी अतल तमे काई इंटरफेयर करतिलो तांकर इंटरनल मैटर रे यस नो so many people from the middle east and the african countries they are actually migrating to european countries that is one ethical issue rohingya issue so Myanmar is denying to give citizenship status to Rohingyas. That is one ethical issue. यहाँ पर तुम्हारा क्वेश्चन आसी कि नहीं? इतना प्रीलिम रे. Without any citizenship. Next, people without any citizenship. तो तुम्हारा सही आर्टिकल को कौन बोझी कि everybody should have a citizenship. Okay. Then drug trafficking, militarization of space, terrorism, that is happening. ISIS, Boko Haram, then sex slave. जो तो हमें कश्मीर फाइल नहीं, केरला फाइल ले तो देखती हो, केरला स्टोरी ना, केरला स्टोरी तुम देखती हो ना, sex slave. तो इधर inhuman practice चली थी. Now the world community should intervene. तो मैंने आइडल बस परियों ने की, ताकि internal matter. कोई जगह तुम्हें interfere करीबो, कोई जगह interfere करीबो नहीं. You have to decide. तुम यदि माने इंटरफेयर करछो ताकर पूरा सोशल फैब्रिक को बर्बाद करिया पे देन दैट इज ए बैड थिंग तो तुम चाहो इंटरफेयर करी तुम एक्चुअली ह्यूमन राइट बंचाइयो चाहो देन दैट इज ए गुड थिंग देन मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस को मिलिटराइज करियो चाहो ओके देन ड्रग ट्रैफिकिंग गोल्डन ट्रायंगल गोल्डन क्रिसेंट एटा सब तमरो सिक्योरिटी इश्यूज अछि okay because of that golden triangle because of that there is actually Manipur issue poppy cultivation that is happening they are also providing so money provide करछिन तमर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को किबा तमर जो माने सेठी माने कोन करछिन डिस्टर्बेंस क्रिएट करछिन से माने एड एंड असिस्टेंस प्रोवाइड करछिन so that is creating problem in the internal security of India आउ किछि तमर स्टेट अछि जो माने दे आर स्पोंसरिंग टेररिज्म सम टेररिज्म भी स्पोंसर करछन प्रॉक्सी वार करछन यस नो सो दिस ऑल आर प्रॉक्सी वार करछन दिस ऑल आर ethical issue in international relation now I think yesterday or day before yesterday Qatar is actually exhibiting 8 Indian Navy ex-Navy officers so now it is the moral responsibility of India to defend them yes or no so this kind of thing you have to add in your explanation what is international ethics it is the ethics application of ethics in international relation or the international issues okay then we will be going to environmental level without ethics environment से कौन होगा तुम्हारो डिफरेस्टेशन होगा कि नहीं तुम्हें किसी नेचर को केयर ही करिवनी
ultimately you will be harming to the mankind. You are not harming the trees or plants, you are actually harming the mankind. Without forest, mankind cannot survive. Pollution, poaching, depletion of resources, wildlife crime, extinction of animals, you all must have studied in your environment, ecology and environment. So ethics is actually your application of all these things which you have studied. ସେଇଟା ତମେ ଏଠି application କରିବ. Okay? ଲେଖିଛ? Poaching of ଏକା କରିଲେ ଚଳିବ. Poaching wildlife crime ଏକା କର. Wildlife crime ଏଟା ବି ହେଇପାରିବ କି ତମେ transboundary जो movement ହଉଛି, that can be also wildlife crime. तापर तमे एबे ethical issues जो चिता बना है, there are some ethical issues or not? There, yes, they are not habituated with this kind of climate. You bought them and they all are dying one by another. So that is also one ethical issue. तो तुमको रिसेंट सिनेरियो सहित तुमको जोड़ी की लिखिया पड़ियो. ओके, तुमको जहां भी सिलेबस अछि तो जानिया पड़ियो. दिस इज वेरी डायनामिक पेपर टू से, वेरी डायनामिक. तुम न पढ़ी की जीव तुम हेटी किछि करि गस परिबो. फुली एप्लीकेशन ओरिएंटेड. तुमको पूरा थ्योरी पढ़िया को पड़ियो. देन थ्योरी पढ़ला परे, ओके, थ्योरी पढ़ला परे जहां भी रिसेंट जहां भी तुम चली पेरिफेर रे ताको तुम अप्लाई करिवो. Without theory you cannot actually apply these things. तो तुमको एबेटू सब पढ़िया पड़ियो, नहले तुम सेठी किछि करि परिबोनी. अब क्वेश्चन तुम भाबनी जे तुमको आसीबो व्हाट इज एथिक्स. ओके, फिर क्वेश्चन एटा आसीबनी कि तुमको तुम कोन कहलो टाइप्स ऑफ एथिक्स, हाउ यू आर लर्निंग एथिक्स. If you think so, then actually you are not doing good preparation. Expect that they will ask application oriented question. तो तुमको पूरा बुझिया पड़ियो और क्वेश्चन लिखि जिया पड़ियो. ओके, देन हमें देखिए हाउ टू evaluate ethics. या माने होची तुमर को सिनेरियो तमे एथिकल वैल्यू को तमे इवैल्यूएट करि परिबो कि करि परिबो. ओके, गोटे काम गोटे सिचुएशन रे ठीक हे पारे, आ गोटे सिचुएशन रे भूल हे पारे. दैट इज द इवैल्यूएशन. जो कोंतनी लेखि गोटे सेंटेंस देकी इवैल्यूएट, तो दिएडू देखो ना, इवैल्यूएट मींस यू हैव टू सी द प्रोस एंड कॉन्स. ओके, सो लिटरल मीनिंग इज दैट how to evaluate ethics, whether that is ethical or not ethical. को सिचुएशन एटा ethical हबो, को सिचुएशन एटा unethical हबो. That is the study. That is the evaluation of ethics. So now it's saying value system in the society. Society माने गोटे value system अछि. तुम सेठी कहि परनी एटा ethical कि unethical. ता माने सब value system तमरा ethical हबो. सती थिला गोटे हमरो एटा unethical थिला. तापरे जेमिन तुमरो सोसाइटी रे कोन अछि कि हमरो मन न्यूक्लियर फैमिली अछि, हमरो एबे न्यूक्लियर फैमिली अछि, आगुरा हम जॉइंट फैमिली थिला. दैट इज द एथिकल वैल्यू सोसाइटी हार्ड. तुमरो मींस एज ए बिग ब्रदर यू हैव रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड्स योर यंगर वंस. दैट इज द वैल्यू सिस्टम. तो सेठी तुम वेस्ट को जीवो, देन दैट मे नॉट बी एथिकल. काइन हेठी तार न्यूक्लियर फैमिली अछि, नोबडी इज रिस्पांसिबल फॉर एनीवन. ओके, देन एठी हमर 24-25 वर्ष पर भी तुमको पेरेंट माने तुमको सपोर्ट करछिन कोन नै. इन वेस्ट आफ्टर 18 years you are independent, you go whatever you want to do, you go for a you work in hotel, you work in restaurant, you earn your livelihood and you do your work and you enjoy your life. But in India रे भाई परियो 24 25 28 30% तुमको तुम पेरेंट्स दो जदी नहीं पैसा. Okay, so these are some value system, or maybe
the boy, sorry, after the marriage, in some society, boy is actually going to girl's house, matrilineal culture, and also in some society, girl is coming to, means in our society, the girl is coming to the boy's house. So you cannot decide that whether that is ethical or unethical. Say well, ଆମର ଏଠି monogamy ଅଛି. Tribal society ଯେମିତି ଆମ ନାୟର community ଅଛି, ଇରୁଲାନା community ଅଛି, ସବୁ community ଅଛି. ତାଙ୍କର କଣ ଅଛି? polygamy ଅଛି. ଆମର ଏଠି polygamy ନାହିଁ. ତାଙ୍କର polygamy ଅଛି. So for their society that is ethical. Then you gonna decide that that is unethical. So value system of the society that will also decide whether that action is right or wrong. Okay. एठी हमरो को कल्चर कंजर्वेटिव कल्चर लिव इन रिलेशनशिप दैट इज अनएथिकल वेस्ट वे लिविंग रिलेशनशिप इज एथिकल हियर चाइल्ड बिफोर मैरिज अनएथिकल देयर चाइल्ड बिफोर मैरिज नॉर्मल ओके इज नॉट इट देन फ्री विल मीन्स तुम पाखरे फ्री विल अच्छी कि नहीं तुम जो कामटा करछ एक्चुअली तुम निजे करछ कि तुम द्वारा किए करैछि तो मने कर जो माने जो दउचंदी कोन कहलो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जो होछि यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किलिंग not contract killing you take that example of no lone wolf attack कोडा तुम कितने कितने था कहली परा लेखि दिया एडा कहि तुमको polygamy may be unethical in some society and polygamy is ethical in some tribal society हैला से बेला तुम लिखि दियो कोडा कहलो हमरो live in relationship may be unethical in our society and that may be ethical in west culture ये तो लिखि दियो तुम डोंट वरी सब बढ़िया हमें आउरी बढ़िया एथिकल कोन मोरल कोन तम पई कोडा ठीक हे परे किंतु अन्य मन पई कोडा ठीक हे परे सब बढ़िया डोंट वरी सो लोन वुल्फ अटैक मु तुम को एग्जांपल दोछि तो टेररिस्ट माने कोन कले कि तुमको इंडोक्ट्रिनेट कले माने गोटे लोक को इंडोक्ट्रिनेट कले कि तांकर मेन इंटेंशन होछि यांको यूज करिकि को जोटे अटैक करिया ओके तो मे बी दे हैव गिवन एलोरमेंट और दे मे हैव told that if you not do that I'll kill your whole family I'll kill you I'll kill the whole family so in that scenario तो यदि से माने माने तांको न माने then whole family will be killed so in that scenario that person actually agreed with the proposal and then he went with the bomb and did the attack that is the lone wolf attack. So in that scenario, you cannot say that whether that person is ethical or unethical because that person is actually under some pressure. Say, well, mu tumu monoro bondu rakhi कहली कि तुम यदि से लोक न मारी ताले मु तुम मार देबी and you kill that person then whether you are ethical or not ethical I cannot decide because you are under pressure you are under duress if you will not do that then you will be killed yes or no तो देखिए तुम्हें कोर्ट रे जब भी लड़ाई हुए ना कोर्ट रे जब भी तुम्हारा आर्गुमेंट हुए suppose somebody has done under pressure तो ताको punishment बहुत कम मिले yes or no then knowledge तो तुम पर knowledge थिला कि नहीं माने तुम अजानत किसी भूल करछ then that is forgivable because crime भी माने तुम्हें accidentally कर देला तुम पर knowledge नहीं तुम थोड़ी जानि के मारछ accident हे गला तो उधर kill करना ना that is called as accident that is not killed you have not killed that person you have that person is actually killed by the accident not by you am I right so their ethics cannot be studied then fear just like I said मु तुम मुंडरे बंधक रखिली कि तुम एटा करो तुम किस काम कलो तो सेटा एथिकल की अनएथिकल सेटा भी एटा हबन
then disease, then suppose due to some disease you have some mental challenge, you are mentally challenged, you are not able to recognize anyone, or because of disease you could not help somebody, then can the ethic means can the ethics can be studied in your action? No, because you are incapable to do anything. So there also ethics cannot be studied. Okay. यही सब जगह में तुम्हारा जो से जहाँ भी काम करते हो, maybe it looks unethical, but actually it is. You cannot say that whether it is ethical or unethical. You can justify the action. Okay. Then practice and habit, the value system in the society. I told you the same thing. Okay. When after marriage the woman goes to the man's house. So whether that is ethical or unethical, some feminists will say it is unethical. But it is the value system of the society. It is the culture of the society. You cannot say whether it is ethical or unethical. Okay. So these are the things you have to. Did you write? यार गोटे एग्जांपल लिखि देबो, लिखिलो ethics syllabus looks very small, but believe me this is very large because it is open ended, mostly application oriented. जो सब्जेक्ट हमर एप्लीकेशन ओरिएंटेड थिबो ना, सिलेबस बहुत वास्ट है. चार्टर लाइन लिखि थिबो, कि चार्टर लाइन में इंप्लिकेशन बहुत अधिक थिबो. Then scope of ethics. माने तुम कहा को कामोडा को एक्चुअली एथिक्स रो व्यू रे आनी परिबो, एथिक्स रो अंडर रे आनी परिबो, को कामोडा को एथिक्स रो अंडर रे आनी परिबो. दैट इज कॉल्ड अ स्कोप ऑफ एथिक्स. जो कोन स्कोप ऑफ वर्क त माने कोन तुमको तुमे को काम करि परिबो से बोला. स्कोप ऑफ एथिक्स माने को कामोडा एक्चुअली तुम एथिक्स रे एम्बिट रे आनी परिबो. दैट इज कॉल्ड अ स्कोप ऑफ एथिक्स. तुम एक्सपेक्ट करबे तुम आसीबो व्हाट इज स्कोप ऑफ एथिक्स. Definitely this will not come in your exam, but you have to know. Okay, everything will be application oriented in your ethics paper. If you see the UPSC paper, you'll see all are application oriented paper. Your case study is fully application, isn't it? Then your theory part, that is also application oriented, but for that you have to know all these things. बोलो. उसको दिए सिनरेस्ट दिए पैरासिटामोल दिए, अब कोई कैल्पल तो कम हो जाएगा. तो 2 दिन तो नहीं था. अच्छा ठीक है गा रहा हूँ. ठीक है. ओके बुझी पालो. स्कोप ऑफ वर्क मींस को काम तुम करि परिबो. सो स्कोप ऑफ एथिक्स मींस को का माने एक्शन उडा तमर एथिक्स रो परव्यू रे आसीबो. हिंदी तमर ह्यूमन एक्शन माने गोटे मनुष्य जो कामडा करछ ना सेटा तमर एथिक्स रे परव्यू रे आसीबो, ना कि एक्शन ऑफ. ओके ह्यूमन एक्शन ऑफ ह्यूमन मींस your daily work, daily routine, eating, sleeping, they are not under ethical purview. Okay, so सेठी तमे ethics study करि परिबोनी. This is a normal thing. Then animal action सेटा तमर ethics रे आसी परिबोनी, कारण they don't have the intellectual ability to decide whether that is right or wrong. Okay, so human action done by any person voluntarily, that means you are under your will, you are doing something. तमे तम निज इच्छा रे किछि काम करूछो, सेटा ही एथिक्स रा परव्यू रे आसीबो, ना कि तमे कोठी खेलुछो, कोठी कुदुछो, कोठी सोउछो, सेटा एथिक्स रे आसीबो. एटा
normal human action. Sorry, action of human. Eating, sleeping. Then ତମର ଏବେ emergency ହଉଛି new field ଯେମିତି ତମର ଏଇ ଯୋଉ international relation ହେଲା ସେଟାକୁ ଲେଖି ପାରିବ environment study ହେଲା ସେଥିରେ ତମର ଆସି ପାରିବ ethical view ethics study of ethics ଆସି ପାରିବ ତ new technology ଆସୁଛି ଯେମିତି ତମର AI ଆସୁଛି ହେଲା artificial intelligence ଆସୁଛି ତମର machine learning ଅଛି ତ ସେଥିରେ ତମର କଣ ମାନେ ଯାହା ବି repercussion ହଉଛି ମେ ବି ଜବ୍ ଲସ୍ ଯାହା ବି ହଉଛି ତ ତାକୁ ବି ତମେ ethics ର ପରିଭିରେ ଆଣି ପାରିବ so ethics is actually widening because of humans because human are actually permeating in every sphere of life maybe technological maybe social maybe your environmental maybe scientific everywhere human is actually doing something some action you must be doing that's why everything can be included under ethical purview except action of humans that is normal daily work you must be doing and animal action animal action means jungle rule in jungle they are killing and they are eating that small baby small rabbit so you cannot include that under ethics purview understood because they cannot be studied because they don't have that intellectual ability intellectual capacity to decide which is right and which is wrong okay so now like AI you have some ethical study here because of AI there may be job loss yes or no you may be getting some values because of AI like efficiency economy you must be getting but because of that you are losing some employment opportunity yes or no then social media don't worry we'll be reading all these things comprehensively social media because of social media तमर बहुत किसी ethical issue सेठी अछि fake news हे गेला nudity हे गेला तमर एठी कोन अछि और influence fake influencer हे गेला fake news हे गेला ता जो जहां भी इफेक्ट होछि they are also under the purview of ethical study don't worry सब पढिबा OTT तमर सेंसर नाही OTT रे जो तमर कोनटा शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड के Raj Kundra. he got arrested because of this OTT nudity in OTT no censorship in OTT so here in OTT when everything is freely available a child can also see nudity but that is not legally acceptable yes or no OTT jobless कर दूँगी yes because of OTT nobody is going to movie hall but anyway they have their space and OTT has its own space you cannot enjoy Bahubali in your OTT platform you have to go to the cinema hall yes or no okay so like that from OTT these are some kind of things no censorship in OTT okay so these things we'll be studying again comprehensively don't worry so now you have to understand the basic things you have to understand then we'll be studying everything all these application we'll be studying question will be very application oriented केबे भाबनी तमरो क्वेश्चन नंबर कोन होबो theoretical पचारियो से what is ethics what is morality से पचारियो differentiate between ethics and morality and tell one action which is moral but not ethical and one action which is ethical but not moral ये वाला क्वेश्चन आसीयो तमरो ना कि तमरो ethics कोन scope of ethics कोन तमरो source of ethics कोन एटा सब केबे आसीयोनी सिलेबस अछि पढिया कथा एबे तमरो अछि तमरो abortion केस जो होइतला पे Supreme Court denied 26-week baby that it is actually the argument was that women's right over body versus heartbeat of the unborn child. So Supreme Court denied. No, we cannot permit you to go for abortion. Okay. Don't worry, we'll be seeing all these things in the applied ethics. Don't worry. Applied ethics. From applied ethics, you can actually expect one question, like environmental ethics. Okay. International ethics. There you can expect one question.
Then Supreme Court refuses to recognize same-sex marriage, social not acceptable now. Okay. In some society, maybe it is ethical, but in our society, it is not ethical. Then ethical relativism. This one you write down. What is ethical relativism? এটা তো নথিলা না আগরা কন্টেন্ট রে লাস্ট যে করଥିଲି ମୁଁ ଜାନୁଆରୀ କରିଥିଲି କ୍ଲାସ୍ କରିଥିଲି ଏଟା ସବୁ ନଥିଲା ନା ନଥିଲା ନା ଓକେ ethical relativism. Don't worry, ସବୁ ପଢିବା ଆମେ ୟୁଥନେସିଆ କଣ ସବୁ ପଢିବା ସବୁଗୁଡାକ ତମର ଆପ୍ଲାଇଡ ଏଥିକ୍ସ ରେ ଆସିବ ସବୁ ପଢିବା ଡୋଣ୍ଟ वरी ओके बी पेशेंट तमर एथिक्स सिलेबस सरला ପରେ तमे पूरा फुल कॉन्फिडेंट है कि तमे एथिक्स पेपर देखिया भी जीवो लिखिया भी जीवो डोंट वरी अबाउट दैट दिस इज माय एश्योरेंस बट यू अटेंड द क्लासेस रेगुलरली आज एक दिन क्लास कला तापर ने क्लास आसिलो देन आई कैन नॉट गिव एनी गारंटी. So ethical relativism means because of culture, because of society, the ethical values that actually differ from one person to another person, one society to another society. One act may be ethical in your society, but that act may be unethical in another society. That is called as ethical relativism. Okay, relativism is that actually related to the society of that particular society. Okay, depends on the society, depends on the society, time. Okay, maybe sati was ethical at that point of time, but sati is now unethical. Maybe dowry was ethical at that point of time, কিন্তু dowry is unethical. Huh? With maybe unethical at that point of time, but now you see, maybe with second marriage was unethical at that point of time, but now second marriage is ethical. Okay, so it is all about social acceptance. Maybe in our society, but what is that? Are you are famous for that? Yes, living relationship is unethical. So once he actually in my previous classes he argued. Okay, maybe in our society live-in relationship is not accepted. Those who are actually going for live-in relationship, they are not actually expressing that thing to their parents or to the society. Yes or no? Because it is not acceptable in the society. But in West, after 18 years, they can do whatever they want. That is ethical for them. Intercaste marriage, till now, yes, in some society like urban society, maybe it is ethical, but in rural society, till now it is unethical. Law is actually promoting intercaste marriage, but society is not accepting. Yes or no? So these are called as ethical relativism, because your ethical values will change from one society to another society, one person to another person, and one time to another time. Okay. So ethical principles and values are relative to the culture and society in which they are being observed. What is considered morally acceptable in one society may be morally unacceptable in another society. Write down that. This may be question. This may be these are the questions. These are application oriented questions. एथिक्स तुम तीन सब्जेक्ट अच्छी गोटे नुहे तीन भी नुहे चारिटा अच्छी
साइकोलॉजी, फिलोसफी, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैला सबुर एप्लीकेशन तमर एथिक्स रे अछि हिस्ट्री भी तुम टीरे पढ़िया पड़ियो तो सब जगह रे एप्लीकेशन तमर कोड हबो एथिक्स रे हबो इट इज फुली एप्लीकेशन ओरिएंटेड पेपर तुम भाबनी जे बस गोटे बही पढ़ दे पळेबो तुम हेड क्वेश्चन लिख दे आछियो नो वेरी डिफिकल्ट तुम सब बुझी कि एक्चुअली क्वेश्चन आंसर राइट जे करिवो ताहाल जे तुम हेड क्वेश्चन करि के आस परिवो घोषि दे गले किछ हबोनी सब बुझी कि जाव पड़ियो ओके एग्जांपल लिखि दियो जोटा तुम कहि लेबे कार हैंडराइटिंग भलो अछि मत दबो नोट के लिखुछ के लिखुनो हां समझ हैंडराइटिंग भलो online people you are maintaining the notes anyone Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. okay maintain the notes जहाँ भी तुमको एग्जांपल देखो बहुत जगह एग्जांपल मु तुमको कहूनी किंतु एग्जांपल मो माइंड रे अछि सेति में मु कहूनी तो से एग्जांपल को तुम लिखि दियो जेम तुम कहली सती इन मिडिवल इंडिया एंड वर्सेस सती इन मॉडर्न इंडिया डाउरी इन मिडिवल इंडिया डाउरी इन नाउ डाउरी सिस्टम नाउ से बेला तुम कहली जो child before marriage is unethical in our society or not child before marriage is unethical in our society but child before marriage in west that is normal for them for some society in the west some culture in the west that is normal से बेला जमी polygamy तुम कहली आगुरी एग्जांपल दे भी थिली polygamy may be unethical in our society but polygamy is practiced in tribal society and that is ethical for them some tribal society not all some specific tribal group ओके नोट मेंटेन करो लास्ट मोमेंट रिवीजन किसी करि परिबोनी बिलीव मी तुम पढ़ी परिबोनी मुंडो गरम हो जिवो मुंडो सब बुलेबो हला मुंडो बुलेबो किछि मुंडे पसिबोनी तुम बही देखुथो मुंडे किछि पसमुथो हला एबे जहाँ पढ़िया था पढ़ी दियो जहाँ बुझिया था बुझी दियो 2 मास पळेबो 3 मास पळेबो लास्ट मास तुम मुंडो बुलेबो किछि मुंडे पसिबोनी जहाँ पढ़ियो किछि मुंडे पसिबोनी हला जति में एई जो 3 मास तमर अछि that is actually crucial very crucial okay liquor in middle east countries that is unethical for them that is haram for them but liquor in west that is ethical even liquor if you are consuming liquor then your family will scold you but in Punjab Haryana whole family member might be taking liquor because climate decides your weather system decides what kind of thing you will be taking okay so then write down merits of cultural relativism just one point write down that actually promotes cultural tolerance that means you have to accept the difference of different ethical practices of different societies तुम पे जोटा ठीक हो मो पे ठीक हो किसी माने अछि किसी माने नहीं ना तुम पे तुम से ठीक थाई पारे मोर सोशल कंडीशन हिसाब रे मो पे आ गुड किसी ठीक थाई पारे हां बॉडी लिकर इन मींस बॉडी वाला के देखु छी बॉडी वाला के देखु छी सर आउ थरे ठीक हां कोन कंट्री बॉडी वाला के देखु छी से माने को निजु गरम रखिया पड़ियो ना आ जदि तुम जो सहारन कंट्री देम जाई लिकर पीबो एते गरम रे मर जीवनी हैं से दिन की पियो ना एक्चुअली योर वेदर पैटर्न वेदर सिस्टम दैट डिसाइड्स व्हिच व्हाट यू हैव टू टेक कौन को से बुझी पाने तुम खरा तो डेफिनेटली हबो गोटे ऑप्टिमम लेवल ले कि गोटे मिनिमम लेवल लेले किछ हबोनी हला
सब जिस लिमिट थाए देह खराब हो कि लिमिट थी ना पंजाब कौन लोक जो लिकर पीऊना केते खराब हो कि जो पी देह खराब हो मु एथिकल टर्म रे पढौछि हला आई एम नॉट टीचिंग यू मेडिकल they both are different, okay, they both are different. I am teaching you with respect to ethics. Take that in ethics point of view, not in that medical point of view, okay. Then it promotes cultural diversity for second point. Then accommodate different ethical beliefs and diversity. So for a country like India, when you accept the difference, don't you believe that the social harmony can be ensured? Yes or no? एटा एप्लीकेशन एटा ही लिखा ही नहीं आम जो सोसाइटी अच्छी आम कौन सोसाइटी बहुत डाइवर्स सोसाइटी और डाइवर्स सोसाइटी तुम तुमर ही माने कल्चर को कौन कहलो इंपोज करिवो देन देयर विल बी सोशल स्ट्राइफ जेम तुम हिंदी जेम तुमरो माने इंपोज करा साउथ इंडिया पर so they are resisting or not. If you will actually promote diversity, then the cultural bonhomie माने brotherhoodness that can be improved. brotherhood improve करी हबो ना करी हबोनी जो तमे impose न करी कि actually accommodate करिवे चाहिबो. So this cultural relativism actually promote accommodative nature जोटा तुम लिखा है cultural tolerance, that is nothing but cultural accommodation. Yes or no? It can balance our social, it can actually check our social fragmentation. এটা भी লেখো আরে লেখো কোন বসছো কোন পাই এটা সব লেখা হয়নি এগুলা সব লেখা হয়নি ମୁଁ ତମମାନେ କୋଉ ଯୋଉটা କହୁଛି ଲେଖ ଟିକେ ଦେଖ ଏଇଟାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଇପାରେ ଯୋଉ ଯୋଉଠି ତମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ମୁଁ କହିଦେବି ଏଇଟା ଟପିକ ଏଇଟା ତମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିପାରେ ହେଲା ସେ ସ୍କୋପ ଅଫ ଏଥିକ୍ସ सोर्स ऑफ एथिक्स एटा क्वेश्चन आसीबोनी हैला डोंट वरी एटा जोडी भी आसीबो तुम सब जानि छ कोड कोड हमें वैल्यू सब नौ जंदी सब लिखि देबे किंतु क्वेश्चन एटा आसीबोनी एटा एप्लीकेशन सेति में या पर क्वेश्चन आसी पारे हैला देन एटा लिखले ना प्रमोट्स कल्चरल टॉलरेंस एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड सोशल हार्मनी इट कैन चेक सोशल फ्रैगमेंटेशन सब गुटे तुम सोसाइटी रे पार्ट अछि तमरो सोसाइटी पेपर 1 ने तमरो केते 70 मार्क आसीबो ताकू छाडी के जीवनी नॉल सेठी लेखि परिबोनी तमरो इजी जी सब्जेक्ट छाडी के जीवो सेठी बहुत पछतेबो सोसाइटी हे गेला तमरो सिक्योरिटी इश्यू हे गेला डिजास्टर मैनेजमेंट तमरो एटलीस्ट 20 टू 30 मार्क आसीबो ताटू अधिक आसीबोनी 20 टू 30 मार्क्स एगुलो छाडी के जीवनी गवर्नेंस सोशल जस्टिस हे गेला तो पॉलिटी रो 8टा क्वेश्चन आसीबो गवर्नेंस 4 तमरो सोशल जस्टिस रु 4 आ तमरो आईआर रु तमरो 4 एति तमरो ब्रेकअप थाए छाडी जीवनी हला देन इट एक्चुअली रेस्पेक्ट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एनवायरनमेंट यस और नो तमे रेस्पेक्ट करतो नहीं बट कॉन्टेक्स्ट सहित काइना योर एथिकल प्रिंसिपल कैन नॉट बी इन वैक्यूम माने तमे कहि परिबनी जे हमर जो आमे जाबी वैल्यू सिस्टम हम भीतर अछि सेटा आपे आपे ओरिजिनेट हेछि नो तमे जो कल्चरल सेटिंग रे बढी छ ता जोगु भी तमरो वैल्यू सिस्टम माने इम्बाइब करछ कि नहीं तो जे कल्चरल रिलेटिविज्म तो प्रमोट करिवो दैट मींस यू विल रेस्पेक्ट द कॉन्टेक्स्ट वी ऑल आर प्रोडक्ट ऑफ सिचुएशन और नॉट हमन जहां भी एठी अछंती बिकॉज़ ऑफ आवर सिचुएशन तुम घर तुमको माने प्रमोट कले कि तुम जाई कि सिविल सर्विस में लागो तुम आसले एठी पढिया पई का घरे प्रमोट कले नी नहीं तुम बिजनेस करो तो से बिजनेस कलो तो तुम सिचुएशन ही तुमको फोर्स करू काली का तो दुख भी हे पारे कि काली छाड़ी की जाई पारे एठू माने सिविल सर्विस लाइन रू सिचुएशन तुमको अलाउ कला नी तुम प्रिपेयर करि परिबो तुम फाइनेंशियल कंडीशन हेल्प कला नी सो वी ऑल आर प्रोडक्ट्स ऑफ सिचुएशन so that means it is actually respecting the context that means social कंडीशन एटा लेखा इन तमर प्रीवियस क्लास रे एटा लेखा हिनी एटा लेखा हि तमर
पढ़ाई ना नेक्स्ट टाइम मन जब पढ़ेबी यार भी इम्प्रूवमेंट हम सो इम्प्रूवमेंट इज द अल्टीमेट थिंग दैट कैन नॉट स्टॉप काली मुझे पढ़ी आउथरे पूरा आउ इम्प्रूवमेंट हम तापर तक आउथरे इम्प्रूवमेंट हम सो देयर इज नो स्टॉपेज ऑफ इम्प्रूवमेंट okay that means when you are studying the ethics at that point of time you are actually taking the situation in consideration yes or no तो माने एटी एथिक्स से तुम्हारा प्लस माइनस किछ नहीं 0 1 किछ नहीं okay there is no pure white pure black there is actually shades of gray shades of gray केता आसीबो तुम सिचुएशन को तमे कंसीडर करिवो माने तुमको कहली जो एग्जांपल देली शूट तुम शूट करके जानी कि शूट करछो आ तुमको एटा गन रखी तुम कोई शूट करो तो तुम सिचुएशन को स्टडी करलो कि नहीं बुझ पल्ला okay and also it acknowledges the ethical beliefs practices okay जो तुम कहली accommodative nature बस सेती लेखो अधिक दरकार नहीं सेती पॉइंट लिखि दियो तुमको जरा पड़ दियो कि तुम कोन लिखिछ जब नेक्स्ट टाइम पे तुम पढिबो जो जानि परिबो कि तुम कोन पे लिखि दिलो एटा सब एते सब लिखि तुम लिखि परिबो then demerits of ethical relativism what is the demerit लिखुछो सती लिखि पानु सर हां फॉर एग्जांपल यूथनेसिया हमरा पूरा पढ़ै छी पूरा भल से यूथनेसिया कोन तो पूरा सब पढ़ै छी तुम केही पढ़ि न जाई क्लास परे तुम केही गोटे दिन नोट को भी देखिना हां डोंट वरी आमे पूरा पढ़िया यूथनेसिया कोन अछि सब पढ़िया कोन तरह पढ़िया तुम जो सब जहा पढ़ियार अछि मु सेटा पढ़ेबी डोंट वरी पेशेंटली बस फर्स्ट चैप्टर इज द डिफिकल्ट चैप्टर काई तुम पूरा नुआ तुमको सब जिस बुझे में टाइम लागिवो हाउ पेशेंस आफ्टर फर्स्ट चैप्टर यू विल बी अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग तुमको सब कॉन्टेक्स्ट सब माने टर्म गुडा तुमको सब बुझा पड़ जीवो आ तापर डिफिकल्टी आसीबोनी आ मते कोडी कोडा पढ़ियार अछि न जानि छी तुमको एठी यूथनेसिया पढ़ले मु काई पढ़िबे एटा यूथनेसिया तुमको एठी जोटा एग्जांपल तुम देली सेटा ही तुम बुझी परिबो जोठी हमें मु पढ़ीबी तुमरो यूथनेसिया तुम पढ़ेबी सेटा हम जानि छी तुम कोड पढ़ेबी यूथनेसिया कोड तुम पढ़िया दरकार हला डोंट वरी the demerits that means you are what is the demerits that means always you are taking the context as the factor that means you always have an excuse you have always an excuse or not मते एटा हला सेति में एटा करली मते घरे पैसा देलेनी सेति में घरे मु एटी पढिलिनी हां बस yes or no you can actually justify that means universal kind of ethics you cannot create there will not be any kind of universal ethics तो तमे गोटे सब एक्सक्यूज पाइबो कि नहीं कि सेटा सेटा होउची अरे मु काई करिवि सेटा माने बॉलीवुड स्टार मन तो एटा करछन मु काई करिविनी कोछ ना कोन तो तमे कोन करछो सेटा को एक्सक्यूज नै कि तमे भूल काम भी करि परिबो ओके सो देयर इज एक्चुअली because of this moral relativism or ethical relativism there is no objective moral truth जो तुम कहली नो यूनिवर्सल और ऑब्जेक्टिव कि कोटा ठीक कोटा भूल तुम कहि परिबोनी ओके एंड ऑल मोरल बिलीव्स आर इक्वली वैलिड बिकॉज ऑफ द कंटेक्स्ट तो मिछ कहबो गोटे जगह भूल हे पारे आ गोटे जगह ठीक हे पारे तो बंचे बे मिछ कहबो आ का को जानि कि मिछ कहबो हार्म करिवो तो कहि ना कि एटा मु बंचे बे मिछ कहली सेति पई मु एटा ठीक एटा मु जानि कि तुम जानि कि मिछ कहली एटा सेति पई एटा तुमरो भूल ओके से बलिया ये भी स्लेवरी थिला जो हमर थिला से जो ट्रेड करथले स्लेवरी ट्रेड करथले वेस्टर्न कंट्री जो करथले हमर इंपीरियलिस्ट कंट्री जो करथले
So they are justifying slavery. Yes or no? So you can actually justify slavery, genocide. Genocide tomorrow ये justify करले कि नहीं Hitler. Hitler कौन कहले? कि because of Jews they didn't support us in the First World War. Germany got defeated. So now it is our turn to take revenge from the Jews. So he justified because they cheated us. Now we can actually go for genocide. Same genocide तो matter नहीं करियो कि नहीं? कि तो communal right जो होची कि सेमाने आम लोगों को मार देले आमे तांग लोगों को मार देवा. Yes or no? So you're justifying actually wrong act by taking the context. Then torture. तो मने करो जो पुलिस कस्टडी torture होची, they can actually justify that this person actually did the crime and to get the truth, we went for the third degree. They can justify, but which is not ethical. तमे केउ जानो कि से एक्चुअली करची करिनी, से क्राइम करची करिनी, तमे केउ जानिबो? तमको लॉजिकली भाबियो पड़िबो, अदर भी भाबियो पड़िबो ना कि तमको काकू टॉर्चर करी कि ही तमे कथा आनी परिबो. So third degree I think that is illegal also. Okay. ସେଥିପାଇଁ ତମର पुलिस सामने जब जहाँ कहबो that is not admissible in the court of law. Then cultural imperialism, that means some may think that their culture is superior and they will try to impose that culture in others culture. Example ले परियो British culture, they try to impose their value system, their education system in India. They have their ulterior motive. से मानकर निजर किछि इच्छा थिला, माने तांकर सेल्फ इंटरेस्ट थिला. तो सेति से माने आसी कि कल्चरल इंपीरियलिज्म कले by the way of education system or by the way of Christian missionary. तो तमे ताकू एग्जांपल लिखि परियो. बुझि परलो? सही बोलिया. तमे कहबो कि maybe some tribal society they have different culture than us, so they are backward, so we should promote our culture. No, that is actually unethical. They have their own individual culture, we should promote them, we should help them, not to propagate our culture there. We can actually go for assimilation or some kind of acceptance, but not imposition. माने प्रमोट करो कि तमे ताको हेल्प करो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. कि तमे ताको इंपोज करी ताको तमर सोशल सिस्टम रे आनियो चेष्टा करो, because they have their own system. So it may promote cultural imperialism because they think if this is right for us and this is wrong for us, then that should be wrong for us and right for us. Okay. सृष्टि महापात्र सुनिले लेखि होनी, लेखिले सुनी सुनी होनी. तो बर्तमान में किछ कोनी तमे लेखि दियो. पॉइंट लेखो हला, पूरा लेखोनी, पूरा लेखले तमर नोटबुक सरी जीवो. किंतु नोट जरूर बनाओ. एथिक्स रे कम से कम नोट बनाओ. समस्ते को आउ कोथरे नोट बनै पारे कि न बनै पारो, एथिक्स रे नोट बनै कि जीवो. आउ बहुत गुडा एग्जांपल लेखि कि जीवो हला. कारण एथिक्स इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन. तो जेते एग्जांपल दबो, जेते जस्टिफाई करिवो, सेते अधिक मार्क पाइबो. आ जेते खाली माने हापाजाड याडू छाडू लेखि आसीबो, तो याडू छाडू मार्क आसीबो तमरो 80 70 60 पिला पाउछन. 80 70 60 एमि सब पिला पाइबे हला. Then evaluation of ethical relativism. So in evaluating ethical relativism,
It is important to recognize its strengths and weaknesses. Ethical relativism allows for cultural diversity and respect for other culture, which is an essential aspect of globalized world. So in a globalized world, you cannot go for homogeneous culture. So tomorrow society impact of globalization on your society, on Indian society. That is one chapter on in your society chapter. So globalization world means, what is the globalization? Globalization not mean only economical integration. It is the integration of economics, society, culture, technology. Okay, that is called as globalization. So globalization means you are actually promoting your culture there, they are also promoting their culture here. तमे एटी चिकन बर्गर खाउछ, बर्गर हमर कल्चर है कि हमर पूरी सुजी चिकन टिक्का, बट देयर कल्चर इज बर्गर एंड पिज्जा. तो सेमाने आमे बर्गर खाउछ, सेमाने को खाउछ चिकन टिक्का. यस नो. तो तमे जदि कहबो नाही तमे केवल बर्गर ही खाइबो, आमे चिकन टिक्का खाइबोनी, लेकिन तमे बर्गर खाइबो, तो तमे केबे हेले हमर बेस्ट नहीं परिबो कि तम भाई ना, आमे केबे तमर बेस्ट आनी परिबो. तो सही रही था मतलब हमें तो एबे भी आयुर्वेदिक चलता है, हमें एलोपैथी कहीं गए. यस और नो. सो एवरी सोसाइटी हैज सम वीकनेस एंड सम स्ट्रेंथ्स. सो वी हैव टू एक्सेप्ट दैट सम स्ट्रेंथ्स वी हैव टू प्रमोट एंड अदर्स शुड टेक द स्ट्रेंथ फ्रॉम अस, लाइक स्पिरिचुअलिज्म. दैट इज आवर स्ट्रेंथ. तो जितने भी पैसा अर्न करो, अल्टीमेटली यू हैव टू गो एम्प्टी हैंडेड. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज नो लिमिट ऑफ ग्रीड. ग्रीड किसी लिमिट नहीं. तो सेटा इंडिया दिए ना वर्ल्ड को, माने कौन कहला कंटेनमेंट है गला, सेल्फ सैटिस्फैक्शन है गला, योगा है गला. तो सेटा इंडिया दी कि नहीं वर्ल्ड को. वर्ल्ड कौन दोची तार टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट दोची, रैशनल थिंकिंग दोची, से सब हमको दोची. तो तमे दी होमोजेनाइजेशन करिवो, माने होमोजेनियस कल्चर टाइप करिवो, then they are bad will also get impacted here. Like तमाने जो एबे चलची कौन कहले न्यूक्लियरेशन ऑफ फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली चलची. Because of that there is value degradation, yes or no? Suicidal tendency, that is also increasing. Then society is driven by the consumption oriented culture. माने कंजम्पशन करो और फोपाड़ दियो, माने जितने कंजम्पशन तुम करि परिबो. That is also issue. Both parents are working, now child is alone. Okay, तो सीए ताको किसी चाइल्डहुड केयर ही मिललानी, तो अल्टीमेटली से कौन हबो के जानि छी. तो हमर न्यूक्लियर फैमिली हे गेलानी, आगुर तुम घरे तुम पिला को संभाळिबे तुमरो बापा थिले, तो मां थिले, बट समस्त वर्किंग. तो तुम जानि परिबो, once you have a child then you will feel the burden, you will feel the real struggle of life. ओके. तो आगुरु लोक सुसाइड एते करू नथिले, किंतु बर्तमान जो सोशल फ्रैगमेंटेशन हे गेलानी, न्यूक्लियरेशन फैमिली हे गेलानी, सो यू डोंट हैव एनी इमोशनल सपोर्ट. आगु तमे ब्रेकअप होतला तमरो सान भौणी का बड़ भौणी तुमको बुझी दोतला, एबे ना सान भौणी अछि ना बड़ भौणी अछि, तुमके बुझिया भी नांदी हला. सो गोइंग फॉर सुसाइड और नॉट अनएथिकल प्रैक्टिसेस. आगु तुम घर वाच रखिया पे तुम 10टा लोक थिले, तुम नजर रखुले, एबे तुम नजर रखिले बापा ता गले माने काम को, मां भी गले काम को, तुम नजर की रखियो. हैं हैं तुमको जाने सीटी बंद हो स्विच दबाइले तार सीटी घर लगे ना, तुम पछन लगी जीवो. हैं yes. So these all are the things. If you see the West culture, their family system is also eroding. So now also we have imbibed that culture, our family social system, that is also going from your, what is that, joint family culture to individual family culture or nuclear family culture. Now you can feel you all must be living in nuclear family. You must be feeling the burden. तमर इमोशनल सपोर्ट करिवे तुमको केही नांदी, घरे केही नांदी, एकुटी एकुटी लागुथिबो, होची नै.
कौन है सरोज? जाओ 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 जाओ. Okay. So these are the things. So it acknowledges the role of context in ethical decision making and promotes ethical relativism and moral relativism and cultural imperialism, which are both problematic. So these are the problematic things like cultural imperialism and imposition of others' culture. Instead of doing that, we have to accept both strengths and we should assess the strengths and weaknesses. Okay, then you can make a better society. You all are coming from a different place. What do? Girlfriend? Garu? Huh? Huh? अच्छा जाओ जाओ जाओ. अच्छा छुआ डे सॉरी. ठीक अच्छी वाइफ भी गर्लफ्रेंड ହେଇପାରିବ କଣ ଅଛି ସେଟା. Wife is combination of friend, girlfriend, yes or no? And wife. And also enemy. ହେଲା. ओके तमर आज पे क्लास सरिला. नेक्स्ट क्लास देखा. लेखिल क्लास रे बुझी पारलो इजी लागिला. ओके हां आउरी मुंडर पसी जीवो. Sir. તમે વેટ કરો हाँ वेट करो तो एथिक्स सरीबो ना. यू विल बी फुली सुपरफिशियली एथिकल सुपरफिशियली. ओके तमन एथिक्स रे केबे प्रॉब्लम आसीबोनी. ethics is a very easy subject and also very difficult. पढ़ी की जीवनी बुझी जीवनी तो बहुत स्कोरिंग very scoring subject. very scoring किंतु बुझी की जीवनी तुम जो कहली 60 70 80 किए रखियो 150 तुम रखियो 60. हाँ कोई बड़ा यार भाई सिलेबस जा अछि ना सीधा सब डायनामिक क्वेश्चन को बहुत डायनामिक क्वेश्चन आछे. तमे जहां चाहिए तो लिखिए तो लिख परियो किंतु यू शुड जस्टिफाई. हां मान ली तुम पूरा ऑप्शनल पेपर आएगी तो ताको स्पीकर को जस्टिफाई कर दियो. क्या है स्पीकर और जस्ट मोरल टीचिंग आएगी तो लिखि परियो. सोसाइटी तेरा मतलब एथिक्स है बास मु तुम कौन कहली जब जीएस पेपर लिखुछ ना दैट शुड मल्टी डायमेंशनल. तुम सोसाइटी एंगल आनिबो एनवायरमेंटल एंगल आनिबो तुमरो पॉलिटिकल एंगल आनिबो सब एंगल आनी की तुम लिखियो पड़ियो. हेलो आउ कोन सब अछि इंट्रो कंक्लूजन सब एथि कोई भी तुम कोन केते चैप्टर जेन सोसाइटी अछि तुमरो साइकोलॉजी अछि तुमरो पूरा कहली फिलोसॉफी अछि तुमरो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अछि. तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो माने पार्ट आसीबा हमरो जो लास्ट 4 5 6 चैप्टर जो अछि ना ना 3 5 6 चैप्टर जो अछि से तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट है हैला. तो से तुम वे फॉरवर्ड लिखि सेठी और अधिक इंटरेस्टिंग लागे रो चिंता कर. दैट इज मोर इंटरेस्टिंग. कोन मेरे पास उठो आइस नहीं भाई मु जानि तो पचार ऑनलाइन पिला भल लागिला बुझी पारलो. Yes, sir. Yes, sir. ओके पता नहीं जाने मो के पीछे जाने. ओके